Alright, G, this is the part two session of the solve of the paper which we were solving earlier. So now it question says that determine the radius of the star. So radius of the star can be found from the Stephen Boltzmann law in the space physics part we studied, and it's this law says that luminosity of any star is directly proportional to the square is directly proportional to the area and the fourth power of the temperature. So as per that formula, we are having its formula as 4 pi r square into Stephen Boltzmann constant multiplied by t power 4. And we know that the value for this constant is how much? It is 5.67. This will be given to you in the data sheet 5.67 into 10 power minus of 8. So this is the value for the constant provided to you. Okay. तो हमने करना क्या है? We have to find out this R. So we have the luminosity in the previous part. We are having the temperature of the star in the above part. So simply we are going to make R as a uh, this will becomes what R square is equals to L divided by 4 pi sigma t power 4. So all of this will be divided, and to find out R, what will happen? We are going to divide this both the sides. So eventually we are going to place the value under root. The value of L will be equal to 5.48 into 10 power 26 whole divided by 4 pi. Sigma is 5.67 into 10 power minus of 8 into t power 4 is how much? The t power 4 is equivalent to, we found the temperature in the previous part, and this is equal to 6980. So this will be equals to 6980. 6980 is the temperature. So after solving this, you are going to get the value of the radius in meter. So you may solve it out to find out the value of the radius r. And as per MS, this is 5.69 into 10 power 8. 5.69 into 10 power 8. So 5.69 into 10 power 8 is going to be the radius of the star. Next, it says that the gas at the surface of a star has a very high pressure. वहाँ पे pressure क्या है? बहुत ज़्यादा है. To use the basic assumptions of the kinetic molecular theory suggest why in practice a gas at surface of star is unlikely to behave as an ideal gas. तो ये ideal gas क्यों नहीं होगी? तो ideal gas में क्या होता है कि particles are very far apart from each other. But यहाँ पे वो point contradict कर रहा है. अगर high pressure है तो particles are going to be close to each other. So uh, at high pressure, at high pressure, molecules are closer and the intermolecular force will not be negligible. ठीक है? At high pressure, molecules are closer and the intermolecular force will not be negligible. So it will not behave, it will not behave as ideal gas. और आइडियल गैस में हमारे पास क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा होता है. तो ये और वो एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. उनका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए अबाउट द assumption that the kinetic molecular theory can be asked from you in paper. So next, let's jump to the next question. Question number 4. A heavy metal sphere of mass 0.81 kg is suspended from the string. The sphere is undergoing small oscillations from side to side as shown in figure 4.1. So these are the oscillations carried out by the sphere and string is attached to it. The oscillations of the sphere may be considered to be simple harmonic with an amplitude of 0.36 and period of 3 seconds.
Question says, state what is meant by simple harmonic motion. So what is the meaning of simple harmonic motion? G, can anyone tell me what is simple harmonic motion? Yes, student, can anyone tell me the meaning of simple harmonic motion? Force and acceleration are directly proportional and Oh, have no, no, opposite no. direction. No, beta, force and acceleration are not directly proportional. There are two other quantities which are directly proportional. A type of motion, Sir, the displacement and acceleration is yes, proportional, yes. A type of but in opposite motion, directions. yes, a type of motion in which acceleration is proportional to displacement, right? It's a type of motion which the acceleration is proportional to displacement, but acceleration is in opposite direction. ठीक है? Acceleration is in opposite direction to the displacement. Next, it says calculate the angular frequency of the oscillation. So हमें time period यहाँ बताया हुआ है. Time period given to us is 3 seconds. So we need to find out angular frequency, and we know angular frequency is given by what formula, by what term it is represented by a symbol omega. And what is the formula of finding out the angular frequency? Omega is equals to 2 pi f, and it can also be written as 2 pi over capital T. So we are going to find out the omega as 2 pi over 3. So what is 2 pi over 3 will be equals to? It will be equals to 2.1 radian per second. So 2.1 radian per second will be my angular frequency. The angular frequency is 2 pi over 3, which is 2.1 radian per second. So you're going to write down the answer over here, 2.1 radian per second. Okay, moving to the next part, you have to find out the total energy of the oscillation. So if you remember, I taught you this relation for finding out the total energy of the oscillations. That was equal to half into m into omega into x naught square. So finding the formula, finding the energy, the formula we studied was half into mass into angular velocity, angular frequency into x naught square. So we are having all the values with us. What is the mass given to us? The mass given to us is 0.18. So mass will be written as half into 0.18. Omega we found in the previous part 2.1, and x naught is called as, 0.81, yeah, 0. not 0.18. Yeah, 0.81, sorry. So it is 0.81. Sir, is it not half m omega square x naught square? No, it is half m. Yes, it is half m omega square x naught square. Because half mb square is even from there half m. You're correct. So this is 0.81 into 2.1 multiplied by x naught. What is x naught we are having? X naught is going to be 0.036. So this will be 0.036. So you are going to multiply them. What will be the value you are going to get? So it is to be like 2.3 into 10 power minus 3 of joules. So total energy will be equal to 2.3 into 10 power minus 3 of joules, right? Next it says the suspended sphere is now lowered in water. अब हम sphere को जो oscillate कर रहे हैं, sphere को उसको हम पानी में डाल रहे हैं, and sphere is given a sideways displacement. Again उसको displace किया from the equilibrium position, and the water causes the motion to be critically damped. Yes, guys, can you tell me what's the meaning of critically damped? What is damping basically? Damping होती क्या है? Reducing of amplitude over time. Yes, the reduction of the amplitude or the energy
of any oscillating body due to the resistive forces is called as damping. और damping हमारे पास तीन तरह की dampings होती हैं, एक होती है light damping, एक होती है critical damping, और एक होती है heavy damping. ठीक है, these are the three types of damping which we have already studied: light damping, critical damping and heavy damping. तो लाइट डैम्पिंग में हमेशा जो है वो बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है, पर आहिस्ता आहिस्ता उसका कम हो जाता है एम्पलीट्यूड। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होती है कि बहुत ज्यादा जो है वो ऑसिलेट नहीं करती, हाफ ऑफ अ वेव पे वो गिर जाती है। और हैवी डैम्पिंग में क्या होता है, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कम बैक टू रेस्ट। सो it is saying critical damping, so we know that it is not going to oscillate, there will be no specific oscillation, right? There is no going to be specific oscillation. So let's see how will this be beginning. So this is going to begin, we know we are having an oscillation amplitude, the time period of oscillation is 3। तो 3 से पहले पहले हमने इसको जीरो करवा देना है। और हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका, 0.36। 0.36 is somewhere here, this 0.02, 0.03, 0.032, 0.034, 0.036. So probably it will be drawn in this way. Just wait, मेरा पेंसिल हिल गई है। ठीक है, किसी भी जगह पे 3 से पहले पहले you have to put it 0. So this is a graph for the critical damp oscillation is this fine? Yeah. Okay, next says, yes, this question is pretty important, so you should be knowing about it. Question number 5. What does the question number 5 says? That electric potential at a point. Define electric potential at a point. What is the meaning of electric potential at a point? Yes, guys. Can anyone tell me? It is the work done per unit charge in bringing the positive charge from infinity to a point. ठीक है, work done per unit charge in bringing a positive charge from infinity to a certain point is known as electric potential। तो हम बोलते हैं electric potential। नेक्स्ट वो कहता है कि two isolated charged metal spheres x and y are situated near to each other। तो हमारे पास दो isolated charged spheres हैं, एक charged sphere है x, एक charged sphere है y, और their centers of the distance are apart. How much is the distance between both the centers? It is 24 meter. Point P is a variable distance x from the center of the sphere. The center of sphere में कोई भी एक distance आपके पास point P consider हो सकता है on the line joining the centers of the sphere, और उसका ग्राफ आपको शो हो रहा है कुछ इस तरह। Yes guys, what can you infer कि ये जो ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है, विल दिस बी अ ग्राफ फॉर between two like charges or two unlike charges? Unlike. Yes, it will be between two unlike charges, because we know कि जो पहला वाला आपके पास ग्राफ हो रहा है ये किसी भी ऐसी चार्ज बॉडी का है जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, वाई बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव एक्सेस। और ये वाला जो ग्राफ आपके पास नॉर्मली बन रहा है वो किसी भी ऐसी बॉडी का होगा जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास एक्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, वाई जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि इनसाइड द रेडियस ऑफ अ चार्ज स्फीयर द वैल्यू ऑफ वी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वी इसके लिए भी यहाँ कांस्टेंट हो रही है और इसके लिए भी कांस्टेंट। तो ये हमें रेडियस ऑफ एक्स बताएगा और ये हमें रेडियस ऑफ वाई बताएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट पोटेंशियल इज गेटिंग जीरो। इसका मतलब कि बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर जाकर हो रहा है 12 मीटर पे। तो इससे हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि चार्ज ऑन एक्स
charge on X is equals to charge on Y. तो X के ऊपर जो चार्ज होगा और Y के ऊपर जो चार्ज होगा that will be same. So let's write down these findings here. वो कहता है state three conclusions that can be drawn about the spheres. The conclusions may be qualitative or quantitative. तो सबसे पहला हम क्या इसमें लिख सकते हैं बात कि द रेडियस ऑफ एक्स इज 2. यहाँ पे हमें पता चला इसका रेडियस 2 है और इसका रेडियस कितना है यहाँ से यहाँ तक 4. तो आप लिखोगे रेडियस ऑफ एक्स is 2 meters and radius of y is 4 meters. ठीक है, और आप एक और बात भी इसमें ऐड ऑन करना चाहो तो वो भी लिख सकते हो that radius of y is double of the radius of x. Very important question here. Second, what we can witness. रेडियस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं चार्ज की. तो हम ये कहेंगे कि स्फीयर x is negatively charged and y is positively charged. तो हम इस ग्राफ से ये दो बातें और निकाल सकते हैं. इसके अलावा हम और क्या बात करेंगे, हम ये बात करेंगे the magnitude of charge on both spheres will be same. जितना amount of charge एक sphere पे उतनी amount of charge दूसरे sphere पे होगा. So the magnitude of charge on both spheres will be same. So this is what we can infer from it. This is pretty very important question. I am telling you again and again. आगे चलता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a positively charged particle is placed at point x such as at 12 meter. The particle is released. Describe and explain the subsequent motion of the particle. तो लेट्स से ये x था, x के पास नेगेटिव चार्ज है और ये है y के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वो कह रहा है कि इस पॉइंट P पे यानी कि इसके सेंटर पे हमने एक रख दिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. तो क्या होगा इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और तीसरी चीज आप ये बोलोगे द पॉजिटिव चार्ज विल बिगिन टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज स्फीयर. तो ये तीन बातें आपने इसमें लिखनी है. तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, द पॉजिटिव चार्ज particle will be attracted towards the negatively charged sphere. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज. सो देयर विल बी a force between both the charged particles and the charged particle will move and accelerate towards the negative sphere. This is what you have to write for 3 marks for this specific case. So make sure
You just be knowing the understanding of these concepts. They are generally being asked in the papers. Okay, moving to the next question. Question number 6. Another important question mark is pretty very important. Okay. Question says define magnetic flux density. Yes, anyone present here who can answer me out what does the term magnetic flux density means? Yes, कोई बता सकता है magnetic flux density है क्या? Hurry up, please recall. You can make its It's the force definition. per unit Yes, it's force per unit. area when current. No, you can memorize it from its formula that we studied. The magnetic force formula is F is equals to I L B sine of theta, right? And what this B is called as magnetic flux density. तो आप इस फॉर्मूला से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो. B को अगर यूं रखें एक जगह पे तो दिस विल बी F divided by I L sine of theta. ठीक है, तो from this whole ratio you can make its definition. So let's define magnetic flux density. The magnetic force, the magnetic force per unit current per unit length of a conductor placed perpendicular to the magnetic field lines. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमें बेसिकली बता क्या रहा होता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड है या कितनी वीक एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है. ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स टू इट्स पार्ट बी. Electrons are moving in a vacuum with speed of 1.7 into 10 power 7 meter per second. The electrons enter a uniform magnetic field of flux density 4.8 millitesla, and figure 6.1 shows the path of the electrons. एक इलेक्ट्रॉन है वो अंदर गया, उसके ऊपर फोर्स लगी और फोर्स लगते ही वो इस तरह गोल मूव कर गया. ये आपको पूरा जो शेडेड रीजन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब किस डायरेक्शन में, वो हम देखते हैं क्या कहता है. वो कहता है द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन द प्लेन ऑफ पेज, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हाँ जी, वो कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो ये शो हो रही है शेडेड रीजन से, उसकी डायरेक्शन आपने बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, क्या वो अंदर की तरफ है, क्या वो बाहर की तरफ है, या कैसे. सो यस पीपल, टेल मी हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. कौन सा रूल हमें हेल्प आउट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने में. यस, इज देयर एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस? Which rule or law we are going to use to find out the direction of magnetic field? Yes, hurry up. So we will be finding it using the Fleming left hand rule. ठीक है, कौन सा रूल हम यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अगर मैं रिकॉल करूं आप लोगों के लिए, तो आई टॉट यू दैट अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट थ्री फिंगर्स को आपने क्या करना है, इस तरह परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है, जिसमें थंब विल बी योर फोर्स, first finger will be magnetic field, and second finger will be the current. ठीक है, there is force, magnetic field and current being shown by these three fingers. तो इसको हम अप्लाई करते हैं. अब मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का करंट की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट पे जा रहा है, तो आपके करंट की डायरेक्शन कैसे ली जाएगी? लेफ्ट पे. क्यों? बिकॉज यहाँ पे करंट हम कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज
मूवमेंट, हम कन्वेंशनल करंट ले रहे होते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे आप अब देखो, अब आपके पास जो करंट, अगर इस पॉइंट एक्स पे मैं गया हूँ तो ये नीचे जाना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर फोर्स कैसे लग रही है? फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। फोर्स इसके ऊपर कैसे लग रही है? पॉइंट एक्स के ऊपर डाउनवर्ड। और करंट की डायरेक्शन आपके पास कैसे है? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टूवर्ड्स लेफ्ट। तो हम अपने लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हुए हम निकालते हैं इसकी डायरेक्शन। तो अगर मैं फोर्स को डाउनवर्ड रखूं, अपनी मिडिल फिंगर को लेफ्ट की तरफ मूव करूं, तो मेरे पास जो फर्स्ट फिंगर है वो कहाँ पॉइंट करेगी? इट इज गोइंग टू पॉइंट आउट इनवर्ड्स। तो हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द पेज। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट दिस? वो कहता है स्टेट द डायरेक्शन, सिर्फ आपने बताना है कि वो कैसे है। तो आप सिंपली यहाँ लिख दोगे इनटू द पेज, राइट? मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। ठीक है, the direction of the magnetic field will be into the page. Moving onwards to the next part, question says show that the magnitude of the force exerted on each electron by the magnetic field is 1.3 into 10 power 14. So what is the force, what is the formula for the force on a charge is? So we studied this formula. F is equals to q v b sine of theta. And we know this electron is moving, entering the magnetic field at 90 degree. तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? It will be turned as F is equals to QVB. So we need to find out the magnitude of force. So let's write down force F is equals to the magnitude of charge. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज की वैल्यू आपको डेटा शीट में भी गिवन है, बट आपको आनी भी चाहिए। The value of charge on electron is 1.6 into 10 power minus 19. What is the speed with which this charge is moving? The speed is written here. The speed is 1.7 into 10 power 7. So 1.7 into 10 power 7. And what is the value of B? The B is called as magnetic flux density. The value of B is given to you as 4.8 millitesla. So this will becomes what? 4.8 into 10 power minus 3. So you are going to multiply all of them. So your final answer will be appearing as 1.3 into 10 power minus 14 newtons. This is how you are going to find out the value of a force on an electron in the magnetic field. Yes, people, is this fine? Hurry up, please Yeah. speak up. Okay. Next is you have to draw an arrow to indicate the direction of centripetal acceleration. So you know, और ये centripetal acceleration हमने कहाँ पे बनानी है? At point x. So what is the centripetal acceleration? It is the acceleration which is always pointing towards the center of a circle. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जब x के ऊपर, अब ये पूरा एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, राइट? तो व्हाट विल बी द सेंटर? दिस इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी द सेंटर। तो आप एक एरो इस तरह वर्टिकली डाउनवर्ड बना देंगे, एंड ये ब्लू से जो मैंने शो किया हुआ है, एंड दिस ब्लू विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको आप ए सी बोल सकते हैं, ठीक है? इट विल बी कॉल्ड एज ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Okay, next it says use the information in B part 2 to calculate the distance t between the path of the electrons entering the magnetic field and path of electrons leaving the magnetic field। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन यूं सीधा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, यूं गया और फिर यहाँ से वापस, वो कह रहा है पाथ जहाँ से एंटर हुआ और पाथ जहाँ से वापस आया। तो आपने ये टोटल डिस्टेंस निकालना है, डी। ठीक। अब मुझे पता है कि जब मेरा चार्ज घूमेगा सर्कल के अंदर तो मेरी जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यू आर गोइंग टू बिगिन फ्रॉम विच पार्ट, विच पॉइंट? Magnetic force is equals to centripetal force. And we have studied the magnetic force value as what? 1.3 into 10 power minus 14. And what is the value of centripetal force? mv square over r. Okay, it will be mv square over r. So here it is going to be the mass of an electron. We have to find out the distance r.
तो v is going to be the speed with which electron is entering. तो ये मेरे पास बन क्या जाएगा, r को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ. R will be equals to mass of an electron is around 9.11 into 10 power minus 31. Again, the mass of electron will be provided in the data sheet. Next is the speed square. The speed we found was 1.7 into 10 power 7. It is given in the question. Multiply by, this is going to be whole square, and whole will be divided by 1.3 into 10 power minus of 14. So solving whole of this is going to give you the radius r. So when you are going to solve it out, what will be the radius? Let me tell you from marking scheme. This radius r will be appearing as almost 0.02. जब ये पूरा relation आप solve करोगे, so this will be equaling to 0.02. So this is 0.02. R is what? R is the distance from the center till the boundary. So what will this total D will be equals to? So D will be equals to 2R. D is the diameter of that circle, which is twice of the radius. So it is 2 into 0.02. This will be equals to 0.04. So your distance from the starting point and the ending point will be how much? 0.04 meters. Is this understandable? Okay. Next it says the electrons in B are replaced with positrons. So you know what is positron? Positron is just having the similar magnitude of charge as electron, पर इसके ऊपर जो चार्ज का नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट होता है. बेसिकली पॉजिट्रॉन इज एन एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन. So it is positive E, and it is moving with what speed? 3.4 into 10 power 7. Along the same initial path, the positron enters the magnetic field with a draw a line to show the path of positron. और ये 3 marks की लाइन है. तो हमें पता है कि एक तो पाथ बताना है हमने, और दूसरा हमें एक और भी पता है कि जो फोर्स होती है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है, क्यू वी बी के ऊपर. तो चार्ज भी सेम है, बी भी सेम है, बट स्पीड यहाँ पर क्या हो गई है, ज्यादा. सो हमारे पास फोर्स भी लगेगी ज्यादा. ठीक है, व्हेन फोर्स इज गोइंग टू बी मोर, सो डिस्टेंस इज आल्सो गोइंग टू बी मोर. तो आपके पास ये पाथ कैसे बनेगा? अब ये मैं दूसरी लाइन से बनाता हूँ. लेट मी ड्रॉ इट विद दिस ग्रीन वन. सो देयर इज गोइंग टू बी अ पॉजिट्रॉन एंटरिंग अलोंग द सेम पाथ. ठीक है, ये पॉजिट्रॉन आ रहा है, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, और ये जैसे ही एंटर होगा, तो एंटर अब ये कैसे होगा, एक लार्जर रेडियस के साथ ये इस तरह बाहर आएगा. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द पाथ. और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अब इसके ऊपर फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट फॉर 3 marks. इज दिस फाइन? राइट. सो यहाँ तक हम इन क्वेश्चंस को स्टॉप करेंगे. इससे आगे जो है अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हुई. बाकी करंट्स वगैरह तो द टाइमिंग आप इनको ऑन होल्ड कर दें. तो यहाँ पे आज का सेशन हम स्टॉप करेंगे. सो इंशाल्लाह in tomorrow's class we are going to solve another paper. Is this fine? Yeah. Okay, thank you very much and Khuda Hafiz. Lafis.